Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we are here once again and to talk about fundamentals of public administration, which is one of your courses of MPA having course code of 406. Now before moving on to the next lecture part, let us have a brief reflection that whatever we have discussed in our previous lecture. So in our previous lecture we have talked about leadership. So what are the different leadership style, who is a good leader, what are the different skills of an effective leader, and things like that. So when we talk about effective leaders, what comes in your mind? Like for example, who is an effective leader? Which skills an effective leader should have? Now when we talk about effective leaders in the world, there are certain skills required by effective leaders. Like for instance, the most important skill required by an effective leader is communication skill. Now a leader having strong communication skill is really an effective leader. So when we talk about communication, so communication means verbal and non-verbal communication. Like for instance, we talk about oral communication, we talked about written communication. We talk about body language, we talk about facial expressions, we talk about the way you sit or stand, we talked about your tone. So things like that is really very important when we talk about effective leaders. Though the next skill required by an effective leader is like for example, the person who is like for example having control on his or her emotions. We talk about stability. So that is another skill required by a good leader. We have also talked about the judgment skills of effective leaders. We have also talked about their, like for example, decision making skills. We have also talked about their intelligence. So we have talked about various skills an effective leader should have in his or her leadership style. Then we talked about in our previous lecture about different leadership styles. Like for example, we have talked about those leaders who are more authoritative, like for example, they do not involve their followers or team members in decision making. We have also talked about autocratic leadership. In this type of leadership, we talked about those leaders who do not like empower their employees, who do not involve their employees in decision making. And we have also talked about, like for example, those leaders who have a high pace of work, who are fast movers, who are fast decision makers, and who wants things to be done quickly, rapidly. And we have also talked about transformational leader. So we are in transformational leader. We have talked about those type of leaders who are caring, who are like do something beyond the imagination of their followers. So we have also talked about coercive leaders. Like for example, in this coercive leadership style, we have talked about those type of leader who, like for example, imposes their decisions on their followers, on their team members, and then who want things to be done in any case. And then of course that has certain benefits, but it has more disadvantages when we talk about coercive leadership style. So according to most of the philosophers, there is no one best way of leadership style. So what we need to do here, we need to have a leader who has a combination of all these leadership styles. Like for instance, we need to have a leader who is caring. We need to have a leader who help us to bring out our best. Like for example, a leader who motivates us, जो कि हमारे रियल पोटेंशियल को बाहर लेके आता है, जो हमारी असल सलाहियतों को बाहर लेके आता है, जो हमें इतना मोटिवेट करता है कि we are able to perform beyond the imagination. So हमें एक टारगेट दिया जाता है अपने ऑफिस में, तो हम उस टारगेट को ना सिर्फ मीट करते हैं बल्कि उससे एक्सीड करते हैं. जब उस टारगेट से एक्सीड करते हैं, इट मीन्स कि दैट लीडर इज़ अ वंडरफुल लीडर, जो कि हमें इतना मोटिवेट करता
है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। और हमने एक लीडरशिप का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि अ गुड लीडर इज अ पर्सन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो वी कैन नॉट इग्नोर द सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑफिस में, हमें सिचुएशन के मुताबिक उस सिचुएशन हैंडलिंग को हमें आनी चाहिए। और people who handle the situation well, they are also good leaders. So moving on to this like most important function of administration, which is leadership, now we talk about effective leaders. Now effective leaders should establish relationship with their all members, not just a few special individuals. Now this is a common problem in Pakistan that जब हम public sector में देखते हैं और even private sector में भी हम देखते हैं कि leaders जो हैं जो real effective leaders हैं, they develop like good relationship with all members, with all followers, all team members. So there is no liking or disliking type of factor. So they are neutral. They are giving importance to all of their followers, all of their team members. There is no discrimination based on gender, based on their age, or like based on their qualification, or based on their caste, or anything else. So good leader, effective leaders, वो leaders होते हैं जो अपने तमाम followers को, अपने तमाम team members को एक ही नज़र से देखते हैं और उनको एक ही तरह से साथ लेके जाते हैं, और उसमें वो personal liking और disliking के factor को नहीं लेकर आते। Leader relationships are not limited to employees but include customers, suppliers and other relevant stakeholders in the broader community. तो now you see that जो effective leaders हैं वो न सिर्फ ये कि वो अपने employees के साथ एक equal उनका treatment होता है, वो अपने employees के साथ equally treat करते हैं, वो अपने employees के साथ बहुत ज़्यादा caring होते हैं, और वो उसमें वो personal liking और disliking को नहीं लेके आते, लेकिन इसके साथ साथ जो effective leaders हैं वो are the ideal leaders. They also care about the customers, they also care about all the stakeholders, they also care about the suppliers, and so this is really very important कि जब हम बात करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने कस्टमर्स की, अपने सप्लायर्स की और या तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो जो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं वो इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो इंटरनल हैं चाहे वो एक्सटर्नल हैं, उनके साथ इक्वली बिहेव करते हैं और उनके साथ इक्वली ट्रीट करते हैं और in the best caring manner. So of course the result is better performance. The better performance of employees, the better performance of suppliers, and of course that results in high customer satisfaction, and of course high customer satisfaction can result in customer loyalty. और जब हम customer loyalty की बात करते हैं तो definitely that is required like for example for the survival and profitability of any organization. Okay. Then we talk about why leaders vary their behavior with different followers. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि why जो leaders हैं, why they have a different behavior with different employees, why they have a different behavior with different followers. Like for example अक्सर देखने में आया है कि किसी टीम को जो लीडर हेड कर रहा है, वो लीडर जो है उस टीम के अंदर कुछ लोगों के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट है और कुछ लोगों के साथ उसका बिहेवियर डिफरेंट है. Now that could be positive behavior or that could be negative behavior. तो ये क्या वजह क्या है, इस वजह को अगर हम जानने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक पिग्मेलियन इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है. कि पिग्मेलियन इफेक्ट से क्या मुराद है कि इट अकर्स व्हेन सेलेक्टेड सबऑर्डिनेट्स demonstrate loyalty, commitment, dedication and trust, and as a result win the liking of superiors who subsequently give them higher performance ratings. Now you see that now ये जो phenomena है Pygmalion effect का, this is not only in Pakistan, this is everywhere in the world. Like for example there is a team, उस टीम में there are team members, there are followers, और उन followers को, उन टीम को एक पर्सन जो हेड कर रहा है, who that person is called the leader. Now जो आपकी टीम है, जो आपके followers हैं, now what they do is कि उनमें से कुछ आपके followers या आपके टीम members ऐसे हैं जो कि उस लीडर के साथ अपनी पर्सनल कमिटमेंट, अपनी पर्सनल लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं. और जब वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लॉयल्टी और पर्सनल कमिटमेंट को लीडर के साथ शो करते हैं तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज कि दे गेट द लाइकिंग ऑफ देयर लीडर.
Now this is something which is I call a natural thing. So this is what is going on in some of the organizations के फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी लॉयल्टी जो है वो अपने लीडर के साथ ज़्यादा शो कर रहे हैं. सो एज ए प्रोफेशनल आई रेकमेंड हियर दैट कि लॉयल्टी विद द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू पर्सनल लॉयल्टी. सो इवन अगर एम्प्लॉयज अपने लीडर्स के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग, बट दैट शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी. सो ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी कम्स फर्स्ट एंड देन हैविंग like a true relationship, having a good relationship with the leader is of course required. So having a balance, having alignment between the individual loyalty and the organizational loyalty, this is what is required. So जब हम एक alignment लेके आते हैं organizational interest की और individual interest की, जब हम एक alignment लेके आएंगे तो of course we can minimize this Pygmalion effect. Now the question here arises that when grade goes bad, like for example for leaders success and failure comes from these factors. Like for example there are certain leaders who need for total control. जो ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, जो ही तमाम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को चंद लोग अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, चंद लीडर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, या कोई वन मैन शो शुरू हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे सक्सेस जो है वो फेलियर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे आप टीम वर्क को प्रमोट करें, वहाँ पे आप अपने फॉलोअर्स को प्रमोट करें, वहाँ पे आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी करें, आप एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, बजाय ये कि आप तमाम चीज़ों को अपने हाथ में ले लेते हैं, तमाम डिसीजंस को अपने हाथ में ले लेते हैं. और जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन मैन शो होता है या चंद लोग मिलकर तमाम डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली जो ज़्यादा जो देखने में आया है, जो स्टडीज़ हुई हैं, कि वहाँ पे फेलियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बजाय ये कि वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आए. द नेक्स्ट फैक्टर इज़ रिफ्यूजिंग टू हियर नो. ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जब एक इफेक्टिव लीडर जो है वो एक फेलियर की तरफ मूव करता है. एंड द रीज़न इज़ कि इस तरह का लीडर जब रिफ्यूज़ करता है टू हियर नो, सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. We should, like for example, I always say that we agree to disagree. So we agree to disagree positively. This is what is required in the public sector of Pakistan. So अगर हम अपने employees को positive criticism का, positive conflict का मौका नहीं देंगे तो पाकिस्तान में improvement कैसे आएगी? जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को न सिर्फ डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है, बल्कि उसके साथ साथ उनको इस चीज़ का हक देना है कि वो हमारे साथ पॉजिटिवली डिसएग्री कर सकें. लेकिन ऐसे लीडर्स या ऐसे बॉसेस जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को पॉजिटिव डिसएग्री करने की, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट करने की, मुस्बत तनकीद करने की इजाज़त नहीं देते, डेफिनेटली दैट ऑफ कोर्स टेक्स यू टुवर्ड्स फेलियर. एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर इज इग्नोरिंग द एक्सपर्ट्स. A very important thing, very important phenomena. Like for example, every organization faces different challenges. So in order to overcome those challenges, this is really very important that we need to get the feedback from the experts. So as a leader, if you do not getting help, if you're not getting feedback from the experts, from the relevant persons, from the most competent persons, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, अगर आप एक्सपर्ट्स को इग्नोर करेंगे, उनको फीडबैक को इग्नोर करेंगे, अगर आप रेलेवेंट कॉम्पिटेंट पर्सन्स के फीडबैक को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल नहीं करेंगे, सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज अ बिग फेलियर. एंड सिंगल माइंडेडनेस. वी हैव परसेप्शंस, एवरीबॉडी हैज ए परसेप्शन. सो एज ए ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन, यू नो, वी थिंक. सो इफ यू बिलीव ऑन योर single mind, that is a big blunder. So as a leader, you must involve other employees in decision making. If you believe on your self-perception, if you say that you are the best and you know everything and you can make perfect decisions, that is the beginning of a failure.
So this is really very important that we need to win the trust of our employees. We need to involve our employees in, of course, making decisions, in analyzing situations, and in like, for example, bringing out alternatives. What are the possible solution of a problem? So if those leaders who are use their only single minds for making decisions, the result in most cases is a big failure. Now we talk about how we can develop our leadership skills. Now, and the first one is we need to lead by example. Like for instance here, for example, we need to provide recognition when others do the same. Now, very important. If somebody is performing in our organization well, so why not recognize his or her performance? Now, when we talk about public sector of Pakistan, तो हमारे ज़हन में आता है कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी लैक ऑफ मोटिवेशन हमें नज़र आती है. इन सम केसेस हमें नज़र ये आता है कि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसे भी एम्प्लॉइज़ ऑफर नज़र आते हैं जो कि जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बेहतर नहीं है. नाउ यहाँ पे मैं अक्सर एक बात करता हूँ, यहाँ पे भी करना चाहूँगा कि पेट का दर्द इम्पोर्टेंट है या पेट के दर्द की वजह. पेट का दर्द इम्पोर्टेंट है या पेट के दर्द की वजह? सो ऑफ कोर्स पेट के दर्द की वजह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेट का दर्द. नाउ पेट का दर्द इज सिम्टम एंड पेट के दर्द की वजह इज द रूट कॉज. सो हमें ये देखना ये है कि अगर एम्प्लॉइज़ पब्लिक सेक्टर में वो एम्प्लॉइज़ जो जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है, व्हाट आर द रूट कॉजेस? ना उन रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. और जब हम रूट कॉजेज को जो रिसर्च की गई और आइडेंटिफाई किया गया, तो उन फाइंडिंग्स के मुताबिक जो जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर में पुअर थी, तो उसमें एक सबसे बड़ा जो फैक्टर हमें मालूम हुआ फीडबैक से वो ये था कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था. उनको ये कहा जाता था कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, या उनको शाबाशी नहीं दी जाती थी, या उनको कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, उनको कोई लाइक फॉर एग्जांपल सबके सामने बुला के उनकी तारीफ नहीं की जाती थी. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि वही एम्प्लॉइज वक्त गुजरने के साथ साथ उनका मोटिवेशन लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो गया. सो पहला जब हम बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल्स, एंड द फर्स्ट थिंग इज कि हमें एक एग्जांपल सेट करनी है कि हमारे वो फॉलोअर्स, हमारे वो टीम मेंबर्स, हमारे वो कॉलीग्स जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, उनको हम रिकग्नाइज करें. और ऑफ कोर्स जब हम रिकग्नाइज करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथन होगी, और उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ टीम, एंड ऑफ कोर्स बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with your employees, respecting their abilities and contributions, and demonstrating trust and attentiveness to their needs. Now this is really very important that as a good leader we must build strong relationships. So we need to build strong relationship with all the stakeholders, and employees of course are the most important asset of any organization. So हमने क्या करना है as a good leader? हमें अपने जो employees के साथ एक strong relationship, एक bond जो है strong bond develop करना है. और उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि हमें एक ऑफिस के अंदर एक पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉइज़ जो हैं बेहतर परफॉर्म करें पब्लिक सेक्टर में. हम ये चाहते हैं कि हमारे इदारे की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बेहतर हो. हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए. हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसकी मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो. तो उसके लिए डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वेयर आर द रियल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. नाउ the real meanings of words are not in the words. The real meanings of words are in people. The real meanings of words are in the relationships. तो जब हम अपने words के meanings की बात करते हैं तो of course same words के response में we have different responses. Like for example एक ही बात अगर आपको कही जाती है तो your response is different. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपको एक काम कहता है
तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, और एक अननोन पर्सन वही काम आपको कहता है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। आपका बॉस आपको कहता है कि आई वांट यू टू राइट दिस रिपोर्ट टुडे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? डेफिनेटली इन मोस्ट केसेस यस होगा। और अगर आपको एक अननोन पर्सन कहता है कि आई वांट यू टू राइट द सेम रिपोर्ट टुडे, तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। सो इट मीनिंग दैट कि जो सेम सेंटेंसेस हैं, सेम वर्ड्स हैं, बट योर रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। सो इट मीन्स कि जब भी हम वर्ड्स डिलीवर करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो जो सेंडर या रिसीवर है वो कौन है। नाउ सो द रियल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर इन द रिलेशनशिप। सो ये जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल करें, एक दूसरे की केयर करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी ये मैं हम किस तरह से अपनी रिस्पेक्ट में कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। तो उसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट कि पीपल शुड रिस्पेक्ट यू, तो आज से अभी से आप लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों को सलाम करना शुरू करें। उसके साथ साथ आप अपने वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का, वैल्यू का, कल्चर का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें। आप अपने जितने भी आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, अपने घर में, आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके क्लासरूम में जितने भी लोग हैं, आप उनके साथ प्रॉपर एटिकेट्स के साथ, तमाम एथिक्स को फॉलो करते हुए जब आप बात करेंगे, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट होगा कि पीपल डेफिनेटली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू अ लॉट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। Now the third thing here is we communicate effectively. So communication is a two-way street. So we can build leadership skills if our communication is effective. Now effective means that when we are able to achieve our targets, when we are able to achieve our objectives and goals. So this is really very important. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है, और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि वी हैव ए सेंडर एंड देन वी हैव ए रिसीवर। जब हम बात करते हैं अपने सेंडर की, जब हम बात करते हैं अपने रिसीवर की, तो सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो सेंडर जो है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंटेंट है जो कि वो सेंड कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू दी एजुकेशन अवेयरनेस लेवल ऑफ द रिसीवर होना चाहिए, वन थिंग। और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड देन जो फीडबैक आएगा रिसीवर से सेंडर को, उसको देखते हुए अपनी कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं या जो मैसेज है आपका, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सेंडर एंड रिसीवर जो हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। दैट इज़ वाई वी से दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट वन वे, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। देन बिल्डिंग टीम स्पिरिट। Now talking about improving your leadership skills, here we talk about how to build team spirit. So here encourage and reward collaboration and innovation on a regular basis. Now this is really very important that we need to focus on reward collaboration, and we need to focus on innovation on regular basis. So without good cooperation and collaboration, of course, we cannot ensure creativity and innovation. So people having good team spirits, they have strong relationships, they have a stronger bond, and when the team is connected, when they have a team spirit की जब हम बात करते हैं कि एक टीम में रहते हुए, एक डिपार्टमेंट में रहते हुए, जब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, तो एक दूसरे की केयर करते हैं, तो जो इस चीज़ को इंश्योर करता है, दैट इज़ द लीडर। नाउ लीडर इज़ अ पर्सन जो कि फैसिलिटेट कर रहा है सारे प्रोसेस को, कि वो इंश्योर कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट में, एक टीम में जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो रिलेशनशिप बॉन्ड विद इन टीम मेंबर, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की उसको कोशिश कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको ऑफिस जाने का दिल करेगा, आपको ऑफिस में बैठने का दिल करेगा, आपको ऑफिस में काम करने का दिल करेगा, एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज़ इनोवेशन।
With peace of mind, we have wonderful creative abilities that comes in. So किसी भी person के लिए creative होना और innovation लेके आने के लिए ज़रूरी है कि उसको peace of mind मिले, और अगर हम एक strong team spirit को build करते हैं with the help of leaders, which is one of the skills of a good leader, तो हम अपनी organization को बहुत आगे लेके जा सकते हैं. The next one is set goals that are clear, specific, measurable. So communicate the goals to your team in ways and words that they understand. So now you see that first we talk about clear, specific and measurable goals. So goals must be clear. If goals are unclear, of course, there is lack of awareness. And if goals are not specific, like for example, if you say that I want to improve the performance of my organization. Now this goal is not specific. You need to define that. What do you mean by improved performance? Like for example, if you're talking about profits, so you say that KG, I want to increase our profits at least 10% by the end of the year 2013. So that is something which is specific goal, and that should be measurable. If you are not able to measure the goal, so that becomes really very difficult to know that whether you have improved or not. So goals should be clear, it should be specific, it should be measurable. Now the next part in this skill development is communicate goals to your team in ways and words that they understand. So use the language that your team members understand well. So we should not try to impress each other with those impressive words. So why not use simple plain language, so that is better understood by our team members. So this is really very important, that we should motivate our team members. We should convince our team members in the most simplest manner, and in the method, in the way they prefer. And the next one is understand the finances. Now here we talk about documenting staff progress and success. Looking for ways to save the company money is always a good idea. So whatever we do, we must document it. So we must document that what we have received and what we have spent. Like for example, here we document everything. Like for example, what is coming in and what is going out. So we need to maintain that document. We need to write those activities and those transactions in certain documents, one thing. And of course that help us to ensure the money or finances of our organization. And the next one is encourage the team. Now very important. So we can encourage the team by creating an environment in which people receive recognition for work well done, where employees are motivated to work hard for the success of the organization. So how we can motivate or encourage our team? So we must recognize our employees' efforts. We must give them what they need. We should provide rewards to our employees according to their needs. So when we are making our employees satisfied, when we are making our employees loyal, and when we are making our employees motivated, of course the result is wonderful performance. The next point is help people grow their skills and strengths through education and on-the-job training programs. Now again, this is really very important. We must help our people grow. So helping people grow means that we need to help our people to grow their skills and strengths through education and on-the-job training programs. Here I will also add off-the-job training programs as well. So on-the-job, off-the-job training programs, enhancing their education, and of course building and strengthening their skills. So this is what our team leaders need to do in an organization, particularly when we talk about the public sector of Pakistan. And the next point is provide quality training that will lead to confident and productive employees. Their success will often lead them to become better leaders. So this is really very important. Quality training is really very important. So that increases employee productivity level. So if we want to increase the confidence of our employees, why not train them? So giving trainings, like for example, whenever any employee joins your organization, like for example,
वी हैव न्यू एम्प्लॉयज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब अप्लाई करते हैं, सो देर आर न्यू एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ पहले से काम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं दोज आर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो जब न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए देर शुड बी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो एटलीस्ट एक ख़ास ड्यूरेशन का होना चाहिए, जिसमें उन न्यू एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कम से कम 7 to 10 डेज़ की एक ट्रेनिंग दी जाए, फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उन न्यू एम्प्लॉयज़ को पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं क्या परफॉर्म करें, ताकि जो न्यू एम्प्लॉयज़ जब अपनी रियल जॉब पोस्टिंग पे पहुँचें तो व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग तो उनको पता हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और हम उनके साथ किस तरह हम ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके, किस तरह हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करके किस तरीके से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ट्रेनिंग है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं उसको शार्पन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्वालिटी ट्रेनिंग इज़ वन गुड सोल्यूशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कीप द ड्रीम अलाइव by sharing the vision of company with team and then together putting the dream into action every single day. So keeping the dream alive, this is really very important for any effective leader. So this is a wonderful skill of an effective leader. They keep our dreams alive. So having a wonderful vision, having a wonderful mission, having a wonderful working style, these are the things ensured by effective leaders. Okay, now the next function of administration is motivation. Now, why motivation is important? What comes in your mind? Why do some people climb mountains? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इसके आंसर जो हैं वो आपने देने हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, वाई दे क्लाइम। अच्छा, कुछ लोग हैं दे रन, एंड सम पीपल दे जस्ट सिट। सो हियर यू सी दैट वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु क्लाइम माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ों पे पहाड़ सर कर लेते हैं, कुछ लोग हैं दे रन, और कुछ लोग दे जस्ट सिट। What comes in your mind? अच्छा, अपने बारे में सोच के बताएं कि आप तीनों में से क्या हैं। आप बड़े बड़े पहाड़ सर करना चाहते हैं, आप रन करना चाहते हैं, पहाड़ सर नहीं करना चाहते, सिर्फ रन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ठीक है मजे से बैठ के आप जो है टीवी देखें, मजे से बैठ के आप जो भी आपकी हैबिट है वही आप अपने काम करते रहें, और आप अपने एक ही जगह पे बैठे हुए, आप अपना जस्ट लाइक अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और कुछ नया काम आप नहीं कर रहे, कोई बेहतर काम नहीं कर रहे, तो आप अपने आप को इन तीनों में से कहाँ लेके आते हैं? तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे जहन में आती है, मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन इज द फोर्स that improves your perception, कि मुझे बड़े बड़े पहाड़ सर करने हैं, या मुझे बैठे रहना है, या सिर्फ मुझे जो है वो रनिंग करनी है। सो व्हाई नॉट कि हम अपने विजन को, अपनी ड्रीम को बहुत ऊपर लेके जाएं। व्हाई नॉट वी से कि जी हमने बड़े बड़े पहाड़ सर करने हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव ए वंडरफुल मोटिवेशन लेवल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू मिलियंस ऑफ पीपल गो टू वर्क ईच डे? Now, people go to work each day for different reasons. Like for example, most of the people say that to make money, to support their families, to pay the utility bills, etc., etc., etc. And then people go to work like for example, it's like networking. People want to meet other people, so socialization is there. Then some people say that it's a good exercise. Like for example, घर में फारिग रहने से बेहतर ये है कि आप घर से बाहर निकलें, so it's a exercise as well. अच्छा, कुछ लोग एज ए हॉबी काम करते हैं कि वो it gives them pleasure, so it's like a hobby to them. So different persons, they have different reasons for doing work in different organizations. So motivation is the force
that drives our actions. So हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने घरेलू लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी ऑफिस लाइफ में, so motivation is the force that drives our action. So what is motivation? According to philosophers, people vary in their ability to do an activity and in their willingness to do it. So motivation is the willingness aspect according to Hersey and Blanchard. So motivation is the willingness aspect. So willingness aspect means that your interest level, कि आप किसी काम को कितना चाहते हैं. Like for example, अगर आपको कहा जाता है कि जी एक रिपोर्ट बनानी है तो आए मिलके अभी रिपोर्ट बनाते हैं, एक असाइनमेंट मिली है टीचर की तरफ से, वो भी कर लेते हैं, या फिर एक पिज़्ज़ा खा लेते हैं. तो यू नो द पॉसिबल आंसर्स. व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स? कि जब आपको ये कहा जाता है इन मोस्ट केसेस कि कोई एक रिपोर्ट बना लेते हैं, या कोई एक जॉब असाइनमेंट कर लेते हैं, या एक हमने होम असाइनमेंट टीचर ने दी है वो कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी मोटिवेशन कितनी है वो काम करने की. या एक तरफ अगर आप कहते हैं कि जी फॉर इंस्टेंस जो लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, कि जी पिज़्ज़ा खाने में आपका कितना इंटरेस्ट है. सो ऑनेस्टली अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो मोस्टली हमें जो नजर आता है कि लोग ये कहते हैं कि जी पहले पिज़्ज़ा खा लेते हैं फिर देखते हैं काम को. सो हमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें देखने की जरूरत है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा किस चीज में है. तो हमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की जरूरत है, और मोटिवेशन जो है वो हमारे इंटरेस्ट को शो करता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो विलिंगनेस एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द रियल मोटिवेशन. नाउ जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस दैट अकाउंट फॉर द डायरेक्शन, लेवल एंड परसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन्स एफर्ट एट वर्क. लाइक फॉर एग्जांपल डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं कि एन इंडिविजुअल्स चॉइस when presented with a number of possible alternatives. Like for example, कि एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कौन सा जो है वो अल्टरनेटिव जो है, या कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि उस इंडिविजुअल ने उसको ओके करना है, उसको एक्सेप्ट करना है. द नेक्स्ट इज लेवल, द अमाउंट ऑफ एफर्ट अ पर्सन पुट्स फॉर्थ. नाउ एक पर्सन जो है वो कितनी ज्यादा एफर्ट जो है वो किसी काम के अंदर लगाता है. एंड द नेक्स्ट इज परसिस्टेंस, द लेंथ ऑफ टाइम अ पर्सन स्टिक्स विद अ गिवन एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं. हमने एक काम शुरू किया एंड कुछ ऐसे होते हैं कि लैक ऑफ परसिस्टेंस की वजह से, या जो अपना हमारी एक एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है कुछ लोगों का कि अगर काम तो लाइक कुछ दिनों तक तो वी आर रियली वी स्टिक टू इट, कि हम कहते हैं कि हमने ये करना है, लेकिन थोड़ा सा जब उसमें कोई डिलेज आते हैं या थोड़े से हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं. तो एक हमारे यहाँ वो लोग भी हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह जो दे आर हाईली परसिस्टेंट. जो भी चैलेंजेस हों, जैसे भी हालात हों, वंस दे डिसाइड कि जी आई नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी और मैंने ये काम करना है, सो दे आर हाईली परसिस्टेंट. वो काम जब तक वो कर ना लें वो चैन से नहीं बैठते. तो वो जो आप कितनी देर तक किसी काम के साथ कितने परसिस्टेंट हो के कितनी ड्यूरेशन तक वो काम आप करने के लिए आपकी जो परसिस्टेंस लेवल है वो कितना है, तो वो जो आपकी परसिस्टेंसी है, आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, वो कितनी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, दैट अगेन शोज योर मोटिवेशन लेवल. नाउ लेट अस लुक एट पाकिस्तान्स विमेन क्रिकेट टीम सक्सेस. सो क्या ये जो वी आर प्राउड ऑफ द विमेन क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, तो इनकी जो सक्सेस है क्या ये सिर्फ हार्ड वर्क का नतीजा है या इसके अंदर मोटिवेशन भी आपको नजर आती है? डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन की ही वजह से इन्होंने हार्ड वर्क किया, और उसी हार्ड वर्क और मोटिवेशन की ही वजह से पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने बहुत सारी सक्सेसेस जो हैं वो हासिल की हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट Pakistan cricket team, now you see that we have a wonderful cricket team. Now the successes of Pakistan cricket team किस वजह से हैं? क्योंकि our players in cricket team, they have wonderful potential. So our successes are dependent on the motivation of our players in cricket team. And let's look at these. Can we ever forget these wonderful people? So these people, they are पाकिस्तान के नाम को कितना ऊपर लेके जा रहे हैं. पाकिस्तान के नाम
को कितना बुलंद किया इन लोगों ने और पाकिस्तान के लिए इन्होंने कितने बड़े records set किए हैं. And then we talk about performance formula here. Now this is a very simple formula. यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो ज़्यादा मुझे चाहिए कि first of all हमने अपनी जो फर्स्ट स्टेप है इस परफॉर्मेंस फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज डिस्क्राइब करंट परफॉर्मेंस कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो क्या है. ऑन वन साइड यू से दैट दिस इज योर करंट परफॉर्मेंस, ऑन द अदर साइड दिस इज योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस. नाउ जो आपकी प्रेजेंट या करंट परफॉर्मेंस है और या आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए जो आपको एक कमिटमेंट की जरूरत है, जो यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेवल एंड देन फॉलो अप. If you do not follow up, then of course we lose our persistence. So hurdles come in. आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है और जो आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, तो जब आप करंट परफॉर्मेंस से डिजायर्ड परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं. और अगर आप हाईली परसिस्टेंट नहीं है, अगर आप फॉलो अप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली यहां से पहुंचने से पहले आप डिक्लाइन कर जाते हैं, आपका मोटिवेशन लेवल डिक्लाइन की तरफ जाता है. लेकिन अगर आप फॉलो अप करते हैं और इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अचीव योर डिजायर्ड गोल्स. Now, how are we motivated? This is a very important question we need to ask ourselves. So, in order to answer this question, let us look at different motivation theories, जो कि हम इस चीज़ को understand करने में हमें help out करेंगी कि how are we motivated? And this is most important theory of motivation called Abraham Maslow's needs theory. We also call it needs hierarchy. Now in this needs hierarchy, it starts from bottom: physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, and self-actualization needs. Now I'll give examples of each of these needs. It starts from bottom. Now physiological needs means that, like for example, food, water, air. So without food, without water, without air, nobody can live, nobody can survive. So these are the physiological needs. Without fulfilling these needs, nobody can survive, nobody can live. Now the next level is once you get those physiological needs, what happens with humans that they move towards safety needs, like for example protection and shelter. Once humans get that safety, protection, shelter, they move towards their social needs. So वो चाह रहे होते हैं कि like for example nobody can live alone in this world. So we all need love, we all need, we need to have a family, we need to have friends. So nobody can live alone. So we have a social need. And the next step is, after fulfilling social need, that is esteem need. We also call it self-esteem. Now esteem needs include, like for example, having a wonderful job, having a big designation, having a big home, having a big car. So having a big name, like for example people know you and people you have, like you are having a job, like for example people desire for, like for example people like for example desire for big designations, you become a celebrity and things like that. So that is your esteem need satisfaction. And once you satisfy your esteem need, then you move on to the next level, that is called self-actualization. Now self-actualization means that working for the welfare of others. Now when we look at Abdul Sattar Idi Sahab in Pakistan, and there are many wonderful persons in Pakistan, in each part of Pakistan, who are doing wonderful social welfare for the people of Pakistan. जो कि पाकिस्तान के नाम को उन्होंने बहुत बुलंद किया है, पाकिस्तान को बहुत एक आला मुकाम उन्होंने दिया है, और पाकिस्तान की लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, ये वो लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हैं. नाउ जब हम इस
मैस्लोज नीड्स हायरार्की या मैस्लोज नीड्स थ्योरी को जब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है, तो वो एम्प्लॉयज़, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की बात करते हैं तो इट इज़ द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर टू नो कि जो एम्प्लॉई है वो किस लेवल के ऊपर है। अगर तो वो एम्प्लॉई जो है वो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी लेवल पे है तो हमने देखना ये है कि हमने उसको नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट करना है, और अगर वो सोशल लेवल उसने फुलफिल कर चुका है तो हमने उसको नेक्स्ट लेवल के लिए मोटिवेट करना है। तो हमें अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके ऊपर हमने उनका एनालिसिस करना है कि इस वक्त हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस लेवल के ऊपर स्टैंड करते हैं, और उस लेवल से जो नेक्स्ट ऊपर वाला लेवल है उस लेवल को सामने रख के ऑफ कोर्स हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और वो जो हमारा विजन है, हमारी जो ड्रीम है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द नेक्स्ट मोटिवेशन थ्योरी इज goal setting theory. Now here I say that specific goals and difficult goals, of course, that increases your performance, and for higher performance we need to have this goal setting theory. Now अगर तो आपके जो goals हैं, अगर आपके objectives जो हैं वो general हैं तो definitely it will not improve your performance considerably. So उसके लिए आपने क्या करना है कि you must have those specific goals, you must have some challenging goals. So the more challenging goals you have, the more difficult goals you have, the more specific goals you have, accordingly your performance level increases. Equity theory. Now, when we talk about equity theory, it says that the equity theory was first discussed in early 60s by J.S. Adams. Now, it was a practical explanation for why employees perform the way they do. So, an employee compare his/her job's inputs outcomes ratio with that of relevant others and then corrects any inequity. Employees are motivated when their perceived inputs equal outputs. Now you see that when you look at this slide again, please, equity theory. Now every employees, what they do in any organization, whether public or private organization, they compare their input-output ratio. Like for example, they talk about their efforts. Like for example, if one employee is working 9 to 5 in an organization for 5 days or 6 days per week, so that a particular employee compare his or her performance with some other employee who's working in some other organization with like the same time duration, with the same office requirements and job responsibilities. So the employee compare his or her input and outcome ratio with the other employees in the market outside the organization, with some other organization employees who's working in the same grade and putting in the same efforts and giving out the same outcome. So if that ratio is not equal, then there is inequity. So what we learn from this equity theory, that the employees are more motivated when their perceived inputs equal outputs. So what we need to do here, we need to reward our employees according to the market rates. We need to reward our employees according to the market situation. And if there is any inequity, we need to look into that factor and we need to manage this issue. Otherwise, we cannot keep our best employees with us. The next motivation theory is McLean motivational needs theories, and it focuses on three factors: achievement, affiliation, power. Now, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करते हैं, of course you develop a sense of achievement. कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसलिए भी, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपने काम के अंदर उनका मोटिवेशन इसलिए भी ज़्यादा होता है कि दे फोकस ऑन देयर सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा. दिस इज समथिंग विच इज इन देयर माइंड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एफिलिएशन. लाइक फॉर एग्जांपल, द मोर यू आर अटैच विद योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने ज़्यादा आप क्लोज हैं, जितने ज़्यादा लॉयल हैं, उतना ही ज़्यादा आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज पावर. People love power. People love power of decision making. People want to have a lot of authority. People want to be included in decision making.
So according to McLean motivation need theory, when these three factors are there in the organization, it improves the performance of employees. Now we talk about theory X and Y. Now theory X says that little ambition, dislike work, avoid responsibility. So this theory X talks about those type of employees who have little ambition, who dislike work, and they avoid responsibility. So this theory X is giving a dark picture of our employees, whereas theory Y says that employees are self-directed, they enjoy work and accept responsibility. So as a good administrator, what we need to do is we need to focus on the, of course, or on our employees' strengths. We need to, of course, give them training. We need to polish their skills. So good administrators, they try to follow theory Y here. Now, how we can design a motivating environment? This is really very important. So you cannot motivate people, but you can create an environment or organizational climate in which they will feel motivated. I always say one thing, that we cannot motivate people. So what we can only do is we create a motivating environment in which people get motivated automatically. This is really very important. So how we can create that motivating environment? Like for example, हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे जाते हैं. Now ट्रेनिंग्स में पब्लिक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ. पब्लिक सेक्टर में लोग ट्रेनिंग्स पे जाते हैं. जब वो ट्रेनिंग से वापस आते हैं तो जब लाइक हमने नॉर्मली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है या जो देखने में आया है, जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूँ, तो जो रिसर्च ने हमें शो किया, जो हमने प्रूव किया है कि जो एम्प्लॉइज़ जो ट्रेनिंग करके आते हैं तो क्या व्हाट इज़ द लाइक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है. इन सम केसेस तो क्या होता है कि उन एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है. उन एम्प्लॉइज़ को कहा जाता है कि आप जो सीख के आए हैं आप हमें भी हमारे साथ शेयर करें, वो कंटेंट हमारे साथ शेयर करें. बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि आपने जो वहाँ पे सीखा है उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में यहाँ पे भी प्रेजेंट करें, ताकि जो एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग पे नहीं जा सके उनके लिए भी वो कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेहतरी के लिए डेफिनेटली एक अच्छा सोर्स बन सकता है. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा बहुत कम देखने में आया. ज़्यादा जो चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं जो ट्रेनिंग करके आते हैं तो उनको उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, वार्मली वेलकम नहीं किया जाता, उनको उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह के उनको ट्रीट करना उनका हक बनता है. उनको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको वो अप्रिसिएशन देनी चाहिए, उनको वो अवार्ड्स देने चाहिए, उनको एक ऐसा वेलकम देना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि आप आके हमें ट्रेनिंग दे, बजाय ये कि आप उनको डीमोटिवेट करें. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू से हियर दैट वी कैन नॉट मोटिवेट पीपल. बात किसी को कहने से, किसी को सिर्फ बातें करने से हम मोटिवेट नहीं कर सकते. हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. सो आज से अगर हम ये तहैया कर लें कि हमारे यहाँ जो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पे, उनको आपने वार्मली वेलकम करना है कि ताकि जब आप ट्रेनिंग पे जाएं और वापस आएं तो आपको भी उसी तरह वार्मली वेलकम किया जाए. तो इस तरह से हम एक साइकिल को जनरेट करेंगे जो कि ये फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा. तो जब तक हम सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करने से ज़ाहिर बात है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू यंग फिलोसोफर who suggested 6 points to build a positive motivational environment. Young says that in order to design a motivating environment, what we need to do in the organization is we need to improve our communication. Like for example, we need to minimize communication barriers. We need to, like for example, look into those communication barriers. And like for example, when we look at oral communication and written communication, like for example, the biggest problem of any organization all over the world is communication problem. So what
Young has suggested here that we must improve our communication skills. We must try to minimize communication barriers. And the next point is empower our employees. We must include our employees in decision making. And once we are able to include our employees in decision making, we can do wonders. We can achieve whatever we want. Like for example, we talked about creativity and innovation. We talked about better performance. So that creativity and innovation is not possible without empowering employees, and that improved performance is not possible without empowering employees. So empowering employees means that we need to involve our employees in decision making. We need to involve them in decision making. We need to give them we need to delegate them decision making authority. So this is really very important for any organization, and particularly when we talk about the public sector of Pakistan, this is really very important. And then we need to develop our employees. So here the philosopher suggests that we can develop our employees with the help of training and development. Now, how do we differentiate between training and development? Now, training means learning existing job skill requirement is called training, and learning future job skill requirement is called development. Now, what we need to do here is we need to focus on the real needs of our employees. So what we need to do, we need to do that training need analysis. We call that TNA, training need analysis, or these days we also call it skill gap analysis. So we need to find out what are the root causes, what are the real reasons of the poor performance of our employees, number one. Then we need to categorize, like for example, how many departments need certain type of trainings, how many employees in different departments they need a different type of training, and then we need to design our training programs according to their respective needs, and then we deliver those training programs, and we should not compromise on quality of those training programs and development programs. So in this way we can ensure and we can develop our employees' performance. Now the next point is show appreciation. Now this is really one of the most important non-financial reward. So if we do not appreciate, if we do not recognize each other's efforts, if we do not like for example say shabash to our best performers, if we do not give them appreciation certificates, if we do not give them any any shield or any other thing, so why not? Why not we involve those best employees' families? Why not we invite those best employees' families on certain occasions and give them a strong appreciation? So of course this appreciation could result in enhanced performance, and that is one of the functions of administrators of any good public organization. The next point suggested by young philosopher is manage ethically and impartially. Now this is really very important. We should not discriminate. People who discriminate, of course, they cannot get good results. So we need to follow the ethics, and we need to work without any discrimination. And finally, young philosopher, he suggested that we need to promote workplace wellness. So programs like welfare of the employees and programs like that, those programs need to be developed and strengthened. Okay, the final function of administration is controlling. Now controlling means task of managers is to evaluate how well an organization has achieved its goals and to take any corrective actions needed to maintain or improve performance. Now in any organization in the world, controlling is really very important, because there are employees who are not doing the work as assigned. Like for example, anybody who is deviating from his or her responsibilities. Like आप किसी को कहते हैं कि आपने इस तरफ को जाना है और वो इस तरफ को जाने की बजाय दूसरी तरफ को चल पड़ता है, या किसी को आप कहते हैं कि दीज आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के कोई और अपना ज़ाती काम शुरू कर देता है, या ऐसा काम जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में नहीं है, तो डेफिनेटली कंट्रोलिंग जो फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, डैट कम्स इन, और वो जो डेविएशंस हैं, जो करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो वो कंट्रोलिंग के फंक्शन के अंडर आ जाती हैं.
इसमें हम फर्दर बात करते हैं कंट्रोलिंग पे। आउटकम ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस इज द एबिलिटी टू मेजर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली एंड रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो इफ देयर आर एनी डेविएशंस, तो उन डेविएशंस को करेक्ट करना, लाइक फॉर एग्जांपल इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कंट्रोलिंग को डिफाइन करेंगे, दिस इज मॉनिटरिंग एंड evaluation. Now monitoring and evaluation means that we need to monitor closely and correct any deviations, evaluate it and correct it accordingly. Now there are different challenges faced by administrators in the public sector of Pakistan, and the first one is change. हमने अपने पिछले lectures में बात की कि change is required. If we keep on doing same things every day, we will keep on getting same results every time. So tragedy in developing countries, including Pakistan, is that we keep on doing same things every day, but expecting better results. This is really a very serious issue. So what we need to do is we need to bring positive changes in Pakistan. And the first change we can bring in the public sector of Pakistan is to develop and strengthen positive attitude and behavior of the employees working in the public sector of Pakistan. This is one change which is required immediately. And the next thing is we need to create, we need to adopt new technology. And the next change is we need to do structural changes. We need to make our rules and regulations in the public sector of Pakistan according to the ground reality. So these are the three changes which are immediately required. Technology. As I earlier told you that creating and adopting new technology is very important. It is vital for the success of any organization. So without having latest equipment, without having new technology, without using latest methods, we cannot move forward. And globalism. Now this is really very important कि जब हम public sector की बात करते हैं, globalization is everywhere. So why not कि पाकिस्तान जो है वो एक benchmark सेट करे, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो बेंचमार्क सेट करे, हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं वो बेंचमार्क सेट करें. बेंचमार्क मीन्स दैट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, कि व्हाई नॉट वी डू समथिंग कि पूरी दुनिया में जो काम कोई ना कर सके, व्हाई नॉट कि वो पॉजिटिव काम एज ए पाकिस्तानी नेशन हम वो करके दिखाएं. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनीज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, और उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए हम उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है पाकिस्तान का, हमारा पब्लिक सेक्टर दूसरों के लिए एज ए एग्जाम्पल सेट करे. Okay, these are most important tips for any organization, and then particularly public sector of Pakistan. So we need to ensure these things. So these are the recommendations for the improvement, for the performance enhancement of any organization. The first is notice each individual. So Allah Ta'ala ने हर इंसान को wonderful skills दी हैं. So this is really very important कि हम अपने जितने भी employees हैं उनके individual analysis हम करें, उनकी strength and weaknesses को हम analyze करें, उनकी जो weak areas हैं उनको हम strengths में convert करें, और जो strengths हैं उनको polish करके मज़ीद strength करें, उनको strengthen करें, ताकि हम अपने employees से उनका जो best potential है वो हम use कर सकें, उनके full potential को हम use कर सकें. Say thank you, even a smile can make a big difference. So this is really very important कि at workplace हम किस तरह बेहतर perform कर सकते हैं, किस तरह एक positive, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हम थैंक यू करने की आदत डालें और स्माइल करने की आदत डालें. क्योंकि जब हम थैंक यू करेंगे, जब हम स्माइल करेंगे अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली इससे हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो हमारा मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन लेवल है डेफिनेटली वो ज़्यादा इंप्रूव करेगा. मेक एम्प्लॉयज़ फील रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड. So dignity is really very important, ethics are very important, values are very important, so respect is very important. So we must feel our employees respected and valued. Give importance to all employees. Disrespect मत करें, तमाम employees की values का ख्याल रखें. So definitely this is really very important for the development of any organization. Share your experience and knowledge. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है, वो सिर्फ अपने
आप तक ना रखें, बल्कि इस जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है इसको शेयर करें, इसको ट्रांसफ़र करें। और इल्म जो है वो जितना ज़्यादा आप फैलाते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करें ताकि उसका फ़ायदा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हो, पूरे पाकिस्तान को हो। बी कॉन्फिडेंट अबाउट पीपल। सो हियर इट मीन्स दैट वी मस्ट ट्रस्ट आवर पीपल, वी मस्ट ट्रस्ट आवर एम्प्लॉइज़, we must trust all the persons who are working in our teams, who are working in different organizations. So we must be confident about our employees and be honest and trustworthy. So never be dishonest. As a Muslim, this is really very important, and as a true Pakistani, this is really very important that we must be honest and trustworthy, and don't take personal credit for other success. Now, again, this is a part of good ethics that we should not take credit for other success. जिसने जो काम किया है उसको उसकी appreciation मिलनी चाहिए, और अगर उस काम के अंदर आपकी रोल नहीं है या आपका कम रोल है तो डेफिनेटली जो appreciation level है, जिस पर्सन ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है उसको उतना ही ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, उतनी ज़्यादा appreciation मिलनी चाहिए, and create a blame free culture. जब हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं तो हमें लेग पुलिंग जो है बहुत कॉमन फिनोमिना एक हमें नज़र आती है। आई थिंक कि बहुत कम ऑफिसेज ऐसे होंगे पाकिस्तान में जहाँ पे लेग पुलिंग का जो फैक्टर है वो नहीं पाया जाता। तो लेग पुलिंग को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ब्लेम गेम से बाहर आएँ, कि वी शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजाय ये कहने के कि फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, वाई नॉट कि हम ये देखें कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सेट डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने डेवलपमेंट गोल को सेट करना है। डेवलपमेंट मीन्स कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड मेक वर्क फन। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफिस हमें जाने का दिल करना चाहिए, ना कि ऑफिस में हमें हर वक्त छुट्टी का इंतज़ार जो है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी छुट्टी कब होगी। तो अगर हम अपने ऑफिस को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का माहौल क्रिएट करेंगे, अगर वहाँ पे एक हाई कमिटमेंट और लॉयल्टी का जो फिनोमिना है उसको हम लेके आएंगे, तो डेफिनेटली हम सबको अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का बहुत दिल करेगा। और जब आप अपना दिल से कोई काम करते हैं, अपने फुल इंटरेस्ट से कोई काम करते हैं, अपनी हाई मोटिवेशन के साथ जब कोई काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट इज बेटर परफॉर्मेंस। Now, the golden rule is don't do anything to anyone that you would not want them to do to you. This is really very important. किसी के साथ कुछ ऐसा ना करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई ना करे। सो ये एन इस्लामी बात है कि किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, और हमेशा ये चीज़ देखें कि हमारी वजह से, मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हर्ट ना हो in your office. And of course I'm talking about in our families, in our social circle, in Pakistan and in the world. हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारी वजह से कोई hurt हो। And final thought is, any problem, big or small, always seem to start with bad communication. Someone is not listening. Okay, this is really very important. आप सब अगर अपने पास्ट में देखें तो आपको कहीं ना कहीं नजर आता है कि काश मैं उसकी बात सुन लेता, या काश वो मेरी बात सुन लेता। तो ये जो काश का वर्ड है, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आज से हम एक दूसरे की बात जो है उसको गौर से सुनें। गौर से सुनने के बाद हम उसको एनालाइज करें। अगर आपको उसके बारे में डाउट्स हैं तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, आपके पास आपके कॉलीग्स हैं, आपके पास आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करें, और उसके बाद जब आपको इस चीज़ पे यकीन हो जाए कि जो बात आपको कही जा रही है वो वाकई जो है एक अच्छी बात है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी की बात है, आपकी फैमिली की बेहतरी की बात है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात है, तो डेफिनेटली उस पे अमल करने का आप जो है सोचें, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएं। ना कि ये कि हम लिसनिंग की बजाय हेयरिंग पे फोकस करें, कि ध्यान तो हमारा कहीं और हो लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। सो हमें प्रिटेंड करने को छोड़ना पड़ेगा। आज से हम तहैया कर लें कि हमने प्रिटेंड नहीं करना बल्कि हमने लिसन करना है।
हमें जो बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताई जा रही है, इस वक्त जो मैं आपको लेक्चर आज का जो डिस्कशन हमने की, तो हमने सिर्फ ये नहीं प्रिटेंड करना कि जी मैं सुन रहा हूँ. आई थिंक वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज of course better performance of individual, better performance of teams and better performance of your organization. So this is really very important कि हम आज से जो listening जो है उसके ऊपर focus करें. Thank you very much all of you. So before we leave, let me again remind you कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हमने अपने लीडिंग के ऊपर हमने बात की. आज के लेक्चर में हमने कंट्रोलिंग पे बात की. आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं. हमने डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज की बात की. हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो किस तरीके से, किस तरह से, किन मेथड से, किन थ्योरीज की मदद से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बेहतर इंश्योर कर सकते हैं. आज हमने ये भी बात की कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. हमने मुख्तलिफ फिलोसफर्स की बात की कि उन्होंने क्या क्या सजेशंस दी हैं. वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं. ना ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को हाईली सपोर्टिव करने के लिए हमने डिफरेंट जो फाइनल रिकमेंडेशंस दी. सो आई होप दैट कि आज के लेक्चर से आपको न सिर्फ ये कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर होगी, आपको अपनी असाइनमेंट्स को हल करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी. आपके अपने, और जो हमने मोटिवेशन थ्योरीज की बात की, तो डेफिनेटली जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं वो ना सिर्फ आपके ऑफिस में आपको हेल्प करती हैं, ना सिर्फ एज ए स्टूडेंट आपको हेल्प करती हैं, बल्कि आपकी सोशल लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में आपको हेल्प आउट करती हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत मदद देती हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वंस अगेन.